हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं एआई सेंटर में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यस, वी गोना बी लर्निंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन एआई सेंटर टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आज आपको पहले ही थोड़ा सा इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का हमारे पास इमेज एनालिसिस के अंदर पैकेज आता है, एमएल पैकेज, दैट इज़ प्री ट्रेन्ड ऑन द कोको डेटा सेट। नाउ व्हाट इज़ कोको डेटा सेट गाइस? Coco dataset is, first of all, Coco is common objects in context, right? It's a data set, right? तो ये जो आपका डेटा सेट है ये 80 क्लासेस पे ट्रेंड है। मीन्स 80 क्लासेस मीन्स क्लासेस यहाँ पे क्या हो सकती हैं, यहाँ पे क्लासेस हो सकती हैं जैसे आपको हम जो पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, राइट? सो द क्लासेस कैन बी लाइक बुक, टेबल, लैपटॉप, की, आई नो, वॉच, एनीथिंग, राइट? सो ये हमारी हो गई क्लासेस, एंड इट्स सेइंग दैट you can also train it on your own data to create an ML skill and use for performing object detection where it will work on your data. So this is a retrainable model, ठीक है? ये retrainable model है, और ये जो algorithm यूज़ करता है वो है YOLO, you only look once, you only live once नहीं है you only look once, right? YOLO, and you can see this over here, इसकी documentation यहाँ पे है। कोको डेटा सेट है, कोको डेटा सेट कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट, राइट? दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी यू कैन से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एंड ये जो इसका अगर इसके बारे में पढ़ें तो मॉडल जीपीयू सपोर्ट नहीं करता है अभी के लिए, पाइपलाइन एंड एमएल स्किल दोनों के। एमएल स्किल तब जब हम डायरेक्ट इसको पैकेज से डायरेक्ट पुश कर रहे हैं, एंड पाइपलाइन तब जब पाइपलाइन बना के एंड फिर एमएल स्किल वी आर पुशिंग इट डायरेक्टली इन द यूआईपाथ स्टूडियो, राइट? जो इनपुट टाइप है वो आपका फाइल होना चाहिए, राइट? एंड जो इनपुट डिस्क्रिप्शन है यहाँ लिखा है फुल पाथ ऑफ द इमेज फाइल ऑन विच यू वांट टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। तो वी विल हैव टू प्रोवाइड द फुल पाथ, राइट, नॉट द हाफ पाथ, फुल पाथ हमें चाहिए। ऑब्जेक्ट आउटपुट डिस्क्रिप्शन इसका होगा जेसन विद आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्लास बाइट अरे रिप्रेजेंटेशन अलाउज यू टू कीप बॉक्स अराउंड। अब ये मैं दिखाऊंगा कैसे हम देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के आसपास बॉक्स भी, कि कितने उसका कॉन्फिडेंस स्कोर है, कितने कॉन्फिडेंस स्कोर से हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसने इसको डिटेक्ट किया है कि ये वो XYZ ऑब्जेक्ट है, राइट? सो इट कैन बी डन लाइक दैट। तो जो स्कोर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 मीन्स 0%, 1 मीन्स 100%, राइट? एग्जाम्पल इस टाइप का आएगा, ये हमारी प्रिडिक्टेड बाइट एरे आएगी, मैं बताऊंगा बट इस दिस एवरीथिंग आई लेट यू नो, राइट? एंड ये हमारी प्रिडिक्टेड क्लास है। क्लास मैंने आपको भी बताया था कि जैसे क्लास ये है बुक, ये इसका कॉन्फिडेंस स्कोर है, राइट? क्लास क्या है डॉग, उस फोटो के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस फोटो के अंदर जो चीज़ें होंगी वो यहाँ क्लास के अंदर आ जाएंगी, राइट? जैसे क्लास है चेयर, कितने कॉन्फिडेंस स्कोर से उसने इसको आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ 0.79, ओके? यहाँ पे हम अपना डेटा सेट का फॉर्मेट भी बना सकते हैं अगर हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, एंड ट्रेनिंग के लिए अभी खाली इट सपोर्ट्स ओनली फुल पाइपलाइन रन्स राइट नाउ, ओके? और ये कह रहे हैं हैविंग ऑल द इमेजेस ऑफ द सेम फॉर्मेट। अगर जेपैग है तो जेपैग ही चाहिए, ठीक है? साइज प्रेफरेबली 800 इंटू 600, ये पिक्सल हो गया। हैविंग एटलीस्ट 100 प्लस काउंट फॉर इमेज फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? And it's saying that for each uploaded XML annotation file, for each uploaded image there should be corresponding annotation XML which contains the bounding box details of the image. The required file format for the XML is Pascal VOC, okay? For annotating the image you can use open source annotation like label mg or any other tool of your preference. Below sub points should be considered while creating the .xml files. It's preferred to have single class in the XML file, giving meaningful name to the class as above, avoiding any alteration in the XML file. So this is how your dataset folder will look. जैसे अगर हमारे पास एक कैट की JPEG फाइल है तो मुझे कैट की ही XML डॉक्यूमेंट फाइल बनानी पड़ेगी, बट अभी वी आर नॉट यूजिंग द डेटा सेट बिकॉज वी विल बी ओनली शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इमेज, ठीक है? ओके, एंड ये जो है हमारा, अगर मैं इसको फुल पाइपलाइन रन करूँगा, राइट, सो इट विल बी जनरेटिंग एन आर्टिफैक्ट ऑल्सो, जैसे हमारा नॉर्मल अगर हम ट्रेन पाइपलाइन रन करते हैं उसमें आता है, ठीक है? तो इट विल बी जनरेटिंग रिजल्ट ऑफ TXT, ठीक है? दिस इज सैम्पल वर्क फ्लो, एंड जो उसको यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए दैट इज ML सर्विस एक्टिविटीज़ एंड वेब एक्टिविटीज़ एज वेल। सो लेट्स जम्प टू AI सेंटर एंड लेट्स शो यू गाइज कि हम इसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं इन AI सेंटर, लाइक हाउ आई कैन डिप्लॉय दिस मॉडल इन द UiPath स्टूडियो, राइट? सो फर्स्ट दिस इज योर AI सेंटर, राइट? ये मेरा AI सेंटर आ गया है। मैंने अपने
let's do one thing, let's start from the scratch. Okay, इसको मैं delete कर देता हूँ. And let's create a project and उसको कहते हैं object detect, right? Object detect, let's create it. So मेरा project बन गया है, right? Project हमारा बन गया. We are not using dataset because no, not training this model. We are just showing you with a small example कि इसको हम कैसे use कर सकते हैं in UiPath Studio, how we can generate the image through the studio as well, right? Okay, so directly we can go to the ML package. Okay, यहाँ पे हमें we have to go inside the out of the box packages. If you have a this custom zip file also, you can use it, right? So we're going here, and here you have to go in image analysis, right? And we have to select object detection. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको बताया, दिस इज ट्रेन ऑन कोको डेटा सेट, वही जो इसमें लिखा हुआ है ये यहाँ पे वही इसमें है, राइट? इनपुट डिस्क्रिप्शन पाथ ऑफ द इमेज टू बी एनालाइज्ड, एंड जो जेसन होगा हमारा आउटपुट होगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, राइट? मूव टू पाइथन एंड सपोर्ट ट्रेनिंग ऑन जीपीयू. नाउ इट इज सपोर्ट ट्रेनिंग ऑन जीपीयू, पर हम जीपीयू यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द सेफ साइड ऑफ इट. ओके, जस्ट सबमिट. एंड यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, राइट? ओके, सो नाउ इट्स क्रिएटिंग ए पैकेज, और ये अनडिप्लॉयड है. मैंने पैकेज क्रिएट किया, मैंने एमएल स्किल नहीं क्रिएट किया है. ओके, so let's go to directly, and because see, we are not training our data, so we are not using pipelines, because pipelines is used to train our data and evaluate as well. ठीक है, मैंने आपको बता रखा है सेंटर पर. आई प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियोज. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो इन द यूट्यूब, दैट इज AI सेंटर फ्रॉम स्क्रैच पार्ट 1 and 2. ओके, नाउ आई विल गो टू ML skills. कोई स्किल है, लेट्स क्रिएट वन. So ML skill we can go with object detect, right? Or we can use object only. Okay, यहाँ पे मेजर वर्जन यूज़ करना है, और ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई है, एक्सक्यूज मी, ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इट विल बी सेलेक्टिंग एज 0, राइट? वी डोंट हैव टू यूज़ GPU, सो इसको बंद करते हैं एंड लेट्स क्रिएट इट. एंड ये भी डिप्लॉय हो रही है. लेट्स मीट व्हेन इट विल बी डिप्लॉयड. ओके, सो गाइज यहाँ पे स्किल हमारी डिप्लॉय हो गई है. द स्किल हैज़ बिन डिप्लॉयड. यू कैन सी दैट इट्स स्टेटस इज अवेलेबल नाउ. तो हम इसको UiPath स्टूडियो में वी कैन यूज़ इट एज एन ML skill. Let's switch to UiPath Studio and I'll show you guys how we can achieve this, right? Our skill has been deployed. Okay, let's go to UiPath Studio, and मैंने यहाँ पे packages पे ही install कर लिए हैं. You guys can see that I have already installed ML services activities and web API activity. This will be used for this deserialization activity as well, and this is used for using ML skill. Okay, that's why it's written over here also. You guys can see. Yeah, web activities and ML service activity. We have to use both these in conjunction to use this ML skill, right? And to procure the data out of the ML skill. So let's use an ML skill. So this is the activity that came with ML services activities. Okay, connection mode is robot because we are directly connected to our this orchestrator. We can also use it as an endpoint if we have like you know we have used the public endpoint in the while deploying the ML skill. Okay, but now we have connected to the robot of the orchestrator, so we are using the robot mode. Now if I'll refresh it, so I can see that I have my object over here, right? The object skill over here. So it's saying that input type is file, and this is the thing. Output type is JSON, and this is the description over here, right? Let's go to test skill at once. Yeah, let's go to test skill. Okay, so it's showing that part of the image to be analyzed. Yeah, for the image, I'll just quickly show you guys. For the image, I have already saved an image, so this will be our demo image for today. A group of people in a meeting, and there are people, there's this bottled some type of plant. I think this is cactus, a cup of coffee, laptop, a chair,
three persons watch. Let's see that how it can detect all the objects. I don't think this watch will be detected because it's you know within this guy. So let's see, देखते हैं. ठीक है, ये मेरा है आपका इमेज आपको मैंने दिखा दिया. Let's go into this and copy the image path. Copy as path, we can do that. Test skill. ठीक है, यहाँ मैं इसे कॉपी कर दूंगा. यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है बट ये स्ट्रिंग कभी लेता नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. सो लेट्स डोंट यूज स्ट्रिंग ओवर हियर. लेट प्रेस टेस्ट स्किल. जैसे ही टेस्ट स्किल प्रेस करूँगा यहाँ पे ये सब का सब आपको नज़र आएगा. ये दिस इज एन एग्जाम्पल, पर ये इसका लाइव डेमो होगा, राइट. Because before using it in our workflow, we are testing the skill. यहाँ इसी के अंदर that चल भी रही है कि नहीं. So you can see that it's working over here, and you can see predicted class. Now see, there's a person. The score is 1 means 100%, and this is the bounding box. So this is what this is. This has created a small square box out of that person. ठीक है, near that person, sorry, and उसका जो वहाँ पे confidence score है, it will be showing 1 means 100%. Okay, don't get confused by this box. This is creating a box, and this is the way to create the box, right? This is just the coordinates. Okay, this is a person again, that this time it's giving 0.98 because उसे लगा कि इतना नहीं accurate, right? Cell phone over here we have, it has even detected a cell phone, a cup, a chair, another chair as well, potted plant, okay, plant also, dining table, okay, laptop, and now the byte array. Okay, so now let's do one thing. Let's give this item also, give this input. Okay, so for that let's do one thing. Let's create a variable input, because see यहाँ पे जो मुझे string, sorry, यहाँ पे जो मैं input देना है, that is the argument type string. in argument ये अपने अंदर data ले रहा है, right? तो that will be a string, right? तो तभी मैंने यहाँ पे string के उसमें दिया है. And what I'll do, I'll just give input, and sorry, we have to give the whole file path, right? So I can give like this. Okay, this is saved inside input, and we will use input over here. Okay, and now I'll just show you. This is what, this is a string, this is a JSON string. It's not an ordinary string, this is a JSON string. Okay, so let's create a variable over here. Let's go JSON string. Right, this is a JSON response. We have created JSON string out of it, right? So when I'll run this workflow, it will be saving all this both thing. This both, there are two type of thing over here. First is the predicted class, and second is the predicted byte array. So both of these things will be stored inside JSON string. Now we have to procure the value out of this JSON string, and we have to procure, first we have to procure JSON predicted class, and second we have to procure predicted byte array, right? For that, what we can do, we can use for that we need to use an activity called deserialize JSON, right? What it's doing over here, I can show you also. It deserializes the JSON string to a J object. Means it converts a JSON string to a J object, and while it's converting it to a J object, हम उसकी values then procure कर सकते हैं. ऐसे में इसकी value procure नहीं कर सकता, मतलब ऐसे में इसकी value extract नहीं कर सकता without deserializing it, right? So we need to convert it to a J object or Java object, right? Okay, so let's give it JSON, you can say deserialized. Okay, so now we have created a this is an input, this will be the input over here. This is, every time I'm using it, it's confusing. JSON string. Okay, this is the input, and the output of the J object will be JSON deserialized.
right? Okay, sorry, I need to use it as this. This is of type Newtonsoft dot json dot linQ dot j object. Okay, please do remember it, guys. Okay, now the error has been diminished as well. So what we have done here, we have used the ML skill. ठीक है, हम लोगों ने अपनी ML skill जो बनाई थी उसको यूज़ किया है, एंड ऑब्जेक्ट वाला जो था यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ML skill को मैंने यहाँ पे डिप्लॉय किया है यूजिंग एन ML skill. ओके, एंड टेस्ट करके मैंने उसको यहाँ पे दिखाया आप लोगों की, ये दोनों के दोनों इट विल बी जनरेटिंग बोथ ऑफ दीज क्लासेस, राइट. एंड इनपुट मेरा ये है, पूरा का पूरा फाइल नेम हमारा इनपुट में क्या है, ठीक है. एंड जो आउटपुट है इट्स ऑफ जेसन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है. इससे अगर मुझे डेटा प्रोक्योर करना है तो आई हैव टू डीसीरियलाइज इट और आई हैव टू कन्वर्ट इट टू अ जे ऑब्जेक्ट. हाउ वी कैन डू दैट? we need to be using a deserialization activity that is found under the UiPath.web API activities. Okay, it's pretty clear, pretty easy, right? Not that hard. एंड हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट जाता है, यू कैन क्लिक इट, एंड यहाँ पे आप अपना एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है. जेसन स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने डाला है. एंड जेसन ऑब्जेक्ट इज जेसन डीसीरियलाइज, मैंने एक वेरिएबल बनाया है एंड दैट इज ऑफ जे ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल, ठीक है. इसका क्या है, न्यूटनसॉफ्ट डॉट जेसन डॉट लिंक्यू डॉट जे ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अगर आप गलती से कहीं डाल देते हो तो आपको उसको आना चाहिए कि ये हमारा वेरिएबल टाइप है. ओके, सो अब हमने इसको डीसीरियलाइज कर लिया है. नाउ अब यहाँ पे मेरा, अब हम डेटा प्रिक्योर कर सकते हैं, राइट. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू असाइन एन एक्टिविटी, राइट. अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, यू कैन यूज एज प्रिडिक्टेड class. It will be storing the predicted class like chair, person, laptop, table, etc. potted plant. Yeah. And इसको मैं कैसे प्रोक्योर कर सकता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे जेसन डीसीरियलाइज का जो बनाया था वेरिएबल, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट यूज दिस एंड आई कैन यूज प्रिडिक्टेड. ये जो है ना, ये डायरेक्टली कॉपी होना चाहिए आपका वहाँ से. आई नो कि ऐसे ही आता है तो मैं इसको यहाँ टाइप कर रहा हूँ, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू कॉपी एंड पेस्ट इट, राइट. प्रिडिक्टेड क्लास, ओके, सेव इट, एंड दिस विल बी सेव्ड इनसाइड दिस. अब ये स्ट्रिंग आ गया है, राइट. अब हम लिखेंगे असाइन अगेन, राइट, एंड दिस विल बी, सॉरी, बाइट एरे. ओके, मैं बताऊंगा बाइट एरे क्या होता है. एंड कैन यूज जेसन डीसीरियलाइज्ड एंड प्रिडिक्टेड बाइट एरे. ओह, टू स्ट्रिंग, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल. देख लेते हैं बाइट एरे में कैसा है. प्रिडिक्टेड बाइट एरे, ठीक है, यही है ना. ओके, ठीक है, सेम फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, राइट. अब ये इसको जो यहाँ पे टेस्ट किल करके जब मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ प्रिंट करेगा. तो हाउ नीड टू प्रिंट इट, इट्स प्रीटी इजी. यूज द राइट लाइन, सो वी कैन से दैट द क्लासेस predicted are, can use as plus, and क्या लिखना है यहाँ पे मुझे, predicted class, right. ये मेरी क्लासेस आ जाएंगी यहाँ पे, and I can write a right line over here as well. Use the byte array is byte array, right. Let's try to run this, save, debug. It's a good practice to use debug first. Okay, it's running. Okay, and here we are. Okay, let's see in the output. Okay, and let's go. So it's saying हम यह पहले राइट लाइन का आउटपुट ले रहे हैं, ये राइट लाइन का आउटपुट फर्स्ट वाला.
ये कह रहा है कि द क्लासेस प्रेडिक्टेड आर, जो मैंने आपको दिखाया था टेस्ट के लिए वही आ रहा है, पर्सन 1, स्कोर इसका 1 है, ठीक है, क्लास पर्सन स्कोर 1 एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड सेकंड पे हमारा आ रहा है बाइट एरे। नाउ गाइस व्हाट इज बाइट एरे, आई लेट यू नो। तो बाइट एरे से हम क्या कर सकते हैं, बाइट एरे से हम वापस से अपना इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आई विल शो यू हाउ। ठीक है, अब जैसे ये मेरी बाइट एरे आ गई है, ठीक है, what I can do, I can just use 1 second, or what I can do, I can just copy it from here as well, na. I can just copy it from here as well, like this, and like this. Yeah, let's copy it, and what we need to do, we need to create a image out of it. So let's type byte to image online, ठीक है, जो कोई भी आप ले सकते हो, वी कैन डू इट फर्स्ट, एंड यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू जनरेट द इमेज। ओके, ये एक्स्ट्रा है ना, ओके 1 सेकेंड। डिलीट, मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर दिया, एक सेकेंड गाइस। ओके, दिस वाज इट, 1 सेकेंड। बाइट एरे इस पे क्या आ रहा था देखते हैं, लेट्स पेस्ट दिस, आई कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये है और लास्ट पे यहाँ तक आ रहा है, राइट। ओके, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर विदाउट द कोड्स, एंड पूरा कॉपी हो जाएगा till the last and till the equal to, and let's try to generate the image now. Yeah, here we are. So मैंने आपको बताया था कि that it will be generating a boxed image, right? So आप देख सकते हो how accurate it is. यहाँ पे एक person इसने बताया है this is a curve of confidence score 1, दैट इज ऑफ कॉन्फिडेंस स्कोर 1 एज वेल। अनदर पर्सन, चेयर इसने पीछे डिटेक्ट की, छोटा सा बॉक्स बना रखा है, 81% है, दिस इज 98% पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे सामने, चेयर इज 35%, ये वाली चेयर इसने दिखा दी है। लैपटॉप इसने बताया है ये वाला, ठीक है, इतने पार्ट में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये इसको लैपटॉप सा लग रहा है, इसको है 57%। पॉटेड प्लांट है यहाँ 55 समथिंग इज रिटन ओवर देयर, वी कैन चेक, ऑलवेज चेक इन द दिस क्लास सेक्शन। लैपटॉप में अगेन दिखा रखा है पर्सन 100%। तो गाइज दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस व्हाट टू से मशीन लर्निंग मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं UiPath टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये मैंने एक इमेज का बताया, वी कैन यूज़ एनी इमेज, राइट। इसको हम लूप में भी चला सकते हैं यहाँ पे, ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ इट इन लूप, इसको मैं फॉर ईच के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, एंड वट वी कैन डू, वी कैन यूज़ अ फॉर ईच लूप इन साइड ऑफ इट, एंड ये पूरा का पूरा डेटा उसके अंदर चलेगा, एंड जो भी आपके फोल्डर से डेटा है प्रोक्योर करके इट विल डायरेक्टली क्रिएट दिस टाइप ऑफ एरे, या बाइट एरे से हम डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वी कैन क्रिएट द इमेज आउट ऑफ इट। ओके, okay, so guys, there is one more activity in UiPath which is very beneficial in this context only, in object detection context only. So what it is, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि how we can decode with the help of a external website. So what UiPath has done now,
I have just seen. So it has included, sorry, they have included an activity called encode and decode activities. They are by internal labs, right? आई थिंक जिनका चैट जीपीटी है उन्हीं का इन्होंने एक नया एक्टिविटी भी क्रिएट किया है. एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू use a decode image from base64. So that byte array is a type of base64 string, and we need to decode that image from base64. So we have encode and decode activities. आप download कर सकते हो and you guys can install it through manage packages. I have already done it, right? It's also showing that activities that deal with encoding and decoding data, images or text. ठीक है. So how to use it? You just type decode image from base64. It will be showing over here. अब जो मेरे base64 का string है मेरे पास already है, वो क्या है? वो ये है byte array, right? I'll just write byte array over here, and the path I have already created an output path. इसको मैं delete कर देता हूँ. I have already created an output path, sorry, output folder. This is my input folder, this is output folder, right? तो मैं यहाँ पे दे दूँगा output. If you don't want to create any string over here, you guys can do like this as well. Guys can just create a output variable and उसको मैं point करूँगा output folder पे, output, okay, and now I'll give an variable over here, right? Let's try to run it and see ये कन्वर्ट कर रहा है मेरे base64 स्ट्रिंग को तो बाइट एरे को इमेज पे कि नहीं. ठीक है, लेट्स सी. बॉक्स इमेज पे इमेज तो है हमारे पास. ओके, सो रन सक्सेसफुली हो गया है. लेट्स रिफ्रेश इट एंड वी हैव द इमेज एज वेल. सेम इमेज आ गई यहाँ पे, देखते हैं. वाओ. सो गाइज, अपने को बिल्कुल भी बाहर की वेबसाइट पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज UiPath has already included an activity inside of Studio which is of decode image from base64. It is of internal labs, right? Internal labs ने activity बनाई है. You guys can check it out from here, right? So guys, this was it on object detection. मैं एक बार फिर से रिवाइज कराए तो हमने यहाँ पे क्या किया है. First of all, we have deployed an ML skill in the AI center. हमने pipeline इसलिए use नहीं की because we are not training our data. This thing is trainable. You guys can see. You guys can see over here. This thing is saying this ML package is pre-trained. That's why हम लोगों ने इसकी training नहीं कराई है, right? दिस इज़ रीट्रेनेबल. यहाँ लिखा है रीट्रेनेबल, उसको रीट्रेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ओके, एंड नाउ हम लोगों ने इसकी एम एल स्किल यहाँ पे डिप्लॉय की विदाउट द जी पी यू. वैसे ये था, हम कर सकते हैं जी पी यू के साथ भी, बिकॉज इट्स शोइंग ओवर हेयर कि हम जी पी यू सपोर्ट आ गया है. ठीक है, बट जस्ट फॉर अ सेवर साइड मैंने नहीं किया यूज़. उसके बाद मैंने यहाँ पैकेजेस इंस्टॉल किए इन UiPath. That was the ML, आपका ML services and web API activities. That मैंने ML skill वाली जो activity यूज़ की, I configured it, and मैंने यहाँ पे item पे input दिया है. Input is nothing but my file. full path चाहिए फाइल का, जैसे आपके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. ठीक है, एंड जो JSON response, that is JSON string. अभी मैं इसे प्रोक्योर नहीं कर पाऊँगा डेटा, बिकॉज यहाँ पे दो टाइप की वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्रेडिक्टेड बाइट एरे, एक प्रेडिक्टेड क्लास. तो मैंने इसको डीसीरियलाइज़ किया. ठीक है, अब जाके मैं अलग अलग इसको बाइफरकेट कर सकता हूँ. मैंने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट इज़ ए प्रेडिक्टेड क्लास, सेकेंड इज़ द प्रेडिक्टेड बाइट एरे. ओके, एंड यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको. दोनों को सेव कर दी वेरिएबल्स के अंदर. मैं राइट लाइन कराया. जब मैं राइट लाइन करा रहा हूँ तो इट्स कमिंग लाइक दिस. ओके, सॉरी गाइस, फिर से 2:15 हो गए, तो शीश नींद आ रही है. Okay, so now what we are using decode image from base64. This is an activity from internal labs, and it will be creating our byte array string that is a base64 type to an image, and that image will be the boxed image जैसे मैंने अभी आपको दिखाया. Okay, so with this let's close the video. If you like the content, don't forget to like, share and subscribe. Do share it with your friends who are new to the channel, okay, new to UiPath as well. Thank you so much for being here, guys, and as always,
कीप लर्निंग।